opportunity to come and speak in front of this wonderful audience. I would have loved if more males were here, but then as it is, itne bhi hai to kafi hai. Be satisfied with that. So without wasting much of everyone's time, I think I would like to start right away. So as you all know, I am Dr. Alpa Shah. Okay. So everywhere, I think wherever we go, we females keep finding lectures and talks on women's health, girls' health, adolescent health, etc., etc. There is no male health, boys' health lectures at all. Nobody must have heard about that. Nobody must have taken one. Barring meeting my husband, he's taken a talk on boys and adolescent health. I think in Vidyani Navrachna. Other than that, कोई कभी इसके बारे में सोचता नहीं है. So I think by the end of my talk today, I'll be able to justify this, that why women and health is more important and more significant, and why people are paying so much of attention to this particular topic. So for that, I think we need to start from the beginning. Beginning meaning right from birth. So when babies are born, a girl child is born, a boy child is born, nothing is different. Even after the birth, until you look at their sex organs, it's difficult to say whether it's a girl or a boy. And the growth of the child also is the same. लड़की हो या लड़का, उनका आगे का progress भी same होता है. The requirements which they need is also the same. I think it's okay if I talk in a mix of English, Hindi. Yes. Okay. So even if you use Gujarati also. Yeah. Okay. So लड़की हो लड़का हो, they go the same way. उनकी requirement same होती है. बढ़ते बढ़ते उनके जो भी हम growth parameters देखते हैं, वो भी सेम ही होते हैं till the age of around 10 years or so. तब तक दोनों सेम ही चलते हैं. उसके बाद मेजर चेंज आता है in their life, which we call they enter the adolescent phase of life. So adolescent phase में दोनों के changes आते हैं, which are very different. Emotional and mental changes, okay, they are the same for both. Boys also go through the same mental emotional changes just as girls go through. Other than that, the physical changes which are happening in their body are different. जैसे boys में अगर हम देखते हैं, body size immediately grow करती है, the muscles grow, they have a lot of mustache hair, beard hair, axillary hair, their testis grows, the scrotum grows, the penis grows, everything grows. The hoarseness in the voice increases. So all these changes happen right from the age of 11, 12, or perhaps boys के लिए a little more later, from 14 years or so up to the age of 18, 19. And once all this is achieved, then the boy becomes a man, and mostly after that, after the age of 20, usually ज़्यादा changes हम males में नहीं देखते हैं, right? और against that, जो हम girls में देखते हैं, girls जब adolescent phase में आती है, that starts around 10, 11 years of age. उनमें भी इमोशनल मेंटल चेंजेस होते हैं, सो नो नीड टू से दैट. बट फिजिकली हम जो देखते हैं उनमें ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर होता है, एंड अलोंग विद दैट एक्ने एंड ऑल दैट. बट व्हाट इज द मेन चेंज विच हैपन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बॉयज, एंड दैट इज अटेनमेंट ऑफ मेनार्की और मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होता है. दैट इज द मेन चेंज विच डिफरेंशिएट्स गर्ल्स फ्रॉम बॉयज. Now, menstruation पे इतना जोर हमें क्यों देना है? Because menstruation is something in which every girl loses around 80 to 100 ml of blood from their body. Now, ये blood is pure blood. कोई कचरा blood नहीं होता है. Okay? So ये बात मन में रखनी है कि we are losing pure blood. Just because भगवान ने हमारी मैकेनिज्म इस तरह बनाई है कि we have a womb in our body which is meant to carry a baby. Without the womb, carrying a baby was not possible. So भगवान ने वो मैकेनिज्म बनाया है, because of which every month we have to lose this blood. And because we are losing this blood, our body has to replenish this blood every month. Otherwise, we will go in minus. So this is the main thing which differentiates us from boys.
एंड उसके साथ मेंस्ट्रुएशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आता है. आवर बॉडी हैज बिकम सॉर्ट ऑफ प्लेग्राउंड फॉर आवर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स डिप होते हैं, बढ़ते हैं, देन वापस डिप होते हैं, वापस बढ़ते हैं. थ्रू आउट आवर मंथ the cycle goes on, and because of this ups and downs of our hormones happening in our body, it leads to many changes in our body. सबसे ज़्यादा I think many of the girls must have experienced mood swings जो होते हैं, which is really a fact. Mood swings do happen pre-menstrually, post-menstrually, ये सब होते हैं. Okay, but again menstruation को easily अगर अच्छे से if you want to accept this fact, then eating a healthy diet is very very important, because otherwise आपका body इसको blood को replenish नहीं कर पाएगा. Losing 80 to 100 ml of pure blood from your body every month is not a joke, because males में ये किसी तरह जाता ही नहीं है blood, केवल females में से जाता है. So we have to have healthy food for our body to remain fit lifelong. ठीक है. एंड आज के ज़माने में ये यंगस्टर्स बैठे इसलिए ज़्यादा बोलूँगी कि आज के ज़माने में विथ सो मच ऑफ जंक फूड अराउंड अस एंड विथ जोमेटो स्विगी एट द टिप ऑफ आवर फिंगर्स, ईटिंग हेल्दी फूड आई डोंट थिंक इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. फॉर बिकॉज यू नो ईच एंड एवरी एडवर्टाइजमेंट इज लाइक they want to target your taste buds. They are not seeing about your health. So it's very important for you to stay away from these false foods, because they are zero in nutrition, only giving you calories which you do not need. So please stay away from these fats and from these junk foods as much as possible. Once in a while to indulge in your cravings is okay, but not always, because इसके साथ if the blood is not replenished, it leads to many other problems in your body. For example, पेन तो बाद में आएगा, but infections पहले आएंगे. Infections, vaginal infections, many of you must be experiencing these infections in your body. But कई बार क्या होता है कि हम बोलते नहीं हैं उसके बारे में कि अरे यार ये मुझे खुजली हो रही है, मैं किसको बताऊँ, and then you go and share it with somebody when it crosses a certain limit. But infections are a known fact. They are very common at this age, simply because हमारी जो वजाइना है उसका एक pH मेंटेन होना चाहिए. Vaginal fluid is acidic, and blood जब निकलता है वहाँ से it changes the medium to alkaline, and alkaline medium attracts bacteria. So that is why पीरियड के इमीडिएटली बाद में कई लड़कियों को इन्फेक्शंस, डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, इचिंग की प्रॉब्लम्स होती है. अगर ऐसा होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. बट अगेन इन्फेक्शंस आर अ नोन फैक्ट एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, बट दे कैन बी प्रिवेंटेड विथ प्रॉपर हाइजीन. But sometimes even with proper hygiene also it becomes difficult. Then you need to consult your gynecologist. At this point, I would just like to stress about the things which you are using to control your blood. Normally, 99% of the females use pads, right? Sanitary napkins. This is a good thing. उसके पहले कपड़ा यूज होता था which was very unhygienic. अभी pads पर आए हैं, that is a very good thing. पर उससे भी अच्छी चीज है which we call as menstrual cup. Menstrual cups are celastic in nature, which is very body friendly and very easy to insert once you get the hang of it. And virgins भी उसका use कर सकते हैं without damaging the hymen. So why I am stressing on this menstrual cup is it will really protect you from infections. बिकॉज आप पैड्स पहनो, 4-5 घंटे तक एक पैड रहेगा वहाँ पे विथ द ब्लड ऑन इट, एंड इट कॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, द ब्लड विल कंटिन्यू देयर, एंड उसकी वजह से भी इन्फेक्शंस होते हैं. मेंस्ट्रुअल कप्स विल जस्ट गो एंड स्नगली फिट ऑन द सर्विक्स, आपके यूट्रस के इमीडिएट बाहर,
and you will not have to use a pad on your panty. So उसकी वजह से your freedom of movement also will be there. So just think about it. You can Google it and you'll get plenty of options for your menstrual cups. You will get videos on how to wear your menstrual cups also. बस एक बार हिम्मत करके आपको try करना है. It may take you 1 or 2 cycles to get used to it, but once you get used to it, you'll swear by it. जो लोग menstrual cups यूज करते हैं उनको फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है. इट्स अ वेरी अगर आप एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बहुत है. बिकॉज जस्ट इमेजिन यूजिंग 10 to 15 पैड्स एवरी मंथ एंड पैड्स आर नॉट इवन बायोडिग्रेडेबल. सो आप एनवायरनमेंट को कितना कचरा दे रहे हो. सो मेंस्ट्रुअल कप्स, दूसरा उसका बेनिफिट फाइनेंशियली भी यू कैन यूज अ सिंगल कप फॉर ईयर्स टुगेदर and it costs only around 1000 rupees. So imagine just 1000 rupees में आपके 4-5 साल निकल रहे हैं. So in every way menstrual cups are very beneficial. So you can please go and try them. दूसरा, अगर